like when. कनव ये सारा दोबारा से बताना पड़ेगा जो लोग हम एंटर करेंगे। तो तू एक सेकंड रुक जा, पूरी स्टोरी बताएंगे। I'll tell you the real story of how Kanav started preparing, how I met him for the first time, what blunders he made during his CLAT prep and what great things he did during his CLAT preparation। सब कुछ मैं तरीके से बताऊंगा आप सब लोगों को। बस एक सेकंड वेट कर लेते हैं हम। ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। सो करते हैं। आई थिंक कनव स्टार्ट हो गया है। अच्छा, तो गाइज, as you all know, this session and discussion is about in 6 months, CLAT 2027 will be there. And from now on till your exam, every day is just going to increase your stress level a lot. And during this time, what exactly can we do? That's what we are going to discuss. एंड हमने सेशन में कुछ कुछ चीजें ऐसी रखी हैं विच वी फील जेन्युइनली आप सब लोगों को हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अ, सबसे पहली चीज मैं कनव के बारे में बताता हूँ। यस, कनव इज वन ऑफ आवर फॉर्मर स्टूडेंट्स एंड नाउ अ मेंटर। एंड कनव की ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी एलेट में 2024 में। कनव की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी, ही ऑलवेज वांटेड टू गिव क्लैट एंड गेट अ गुड रैंक एंड गो टू एनएलएस बैंगलोर। एंड माय फर्स्ट मीटिंग विद कनव हैपेंड इन when he was in ninth standard. And he told me that he wanted to meet somebody who's from a national university. And as you all know, I am from NUJ, so he wanted to meet me and discuss how he can prepare for CLAT and all those things. तो मैंने उसको बताया कि ठीक है, यू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, आप धीरे धीरे प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, अभी फुल फ्लेजेड तरीके से करने की जरूरत नहीं है। बट बाय द टाइम ही वाज इन क्लास 11 आया था, उससे पहले काफी हद तक चीजें कर ली थी। एंड 11th में स्ट्रैटेजी ये थी कि 11th में पूरा सिलेबस खत्म करना है एंड 12th में आके बस मॉक्स देने और अपनी एफिशिएंसी और अपनी टेक्निक को बेटर करना है ऑफ गिविंग मॉक्स। बट दिस डज नॉट मीन कि कनव इज लाइक आप सबको एग्जाम क्लियर करने के लिए नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 11th एंड यू नीड टू क्या कहते हैं, वर्क थ्रू आउट द ईयर। 11th में स्टार्ट करना हेल्प्स, but it does not ensure you will definitely get a rank. Because Kanav ke साथ साथ there was another girl who joined in April of her class 12th. Like she prepared only for 8 months and she got a better rank than Kanav in CLAT. But yes, A-Lit में she got a rank of 41. She got a better rank than Kanav because Kanav ने पेपर खराब किया CLAT का। ठीक है, और अब हम 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं कि 6 मंथ्स में थोड़ा सा आई एम गेसिंग ऑल ऑफ यू विल हैव योर स्कूल स्टार्टिंग नाउ। सो इन केस एनीवन इज अ ड्रॉपर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो स्कूल जब स्टार्ट होगा तो कैसे मैनेज करना है चीजों को, कितने मॉक्स देने हैं। वन सिंपल फैक्ट दैट ड्यूरिंग दिस टाइम लॉट ऑफ किड्स लाइक इंक्लूडिंग कनव दे ट्राई टू गिव अ मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे। ठीक है, एंड दैट्स समथिंग आई से कि चलो ठीक है, दैट इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली गो फॉर। बट अ लॉट ऑफ किड्स ऑल्सो डोंट लाइक टू गिव टू मेनी मॉक्स। तो आपको जिस तरीके से भी प्रिपेयर करना है दैट विल बी डिस्कसिंग। एंड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस टाइप की मेंटरशिप लेनी चाहिए, एंड व्हाट सोर्सेज यू शुड स्टडी फ्रॉम, पास्ट ईयर पेपर्स को कितना प्रिपेयर करना चाहिए। स्टिल सी अ लॉट ऑफ किड्स नॉट लुकिंग एट द पास्ट ईयर पेपर्स रेगुलरली, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कनव लेट्स स्टार्ट। आप स्टार्ट करो बताना एंड डिस्कस करना जो भी Sure. आपकी है। स्क्रीन शेयर कर देना। ठीक है, हाँ यार, हाँ, जो भी just आपके starting क्वेश्चन, that. तो अभी हम स्टार्टिंग में एक बार डिस्कस कर लेंगे। हील कीप डिस्कसिंग थिंग्स। किसी चीज के ऊपर कोई बहुत मेजर डाउट आता है तो आप पूछ लेना, वरना आपकी कोई पर्सनलाइज्ड डाउट्स हैं वो उस सेशन के बाद करते हैं। क्लोज टू 1:15 विल एंड विद ऑल द डिस्कशन। फिर हम लोग जो भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, यू गो हेड एंड आस्क दोस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो करें करो स्टार्ट। Yes. I guess you'll have to make me the host. नहीं, आई थिंक बिना होस्ट के भी यू कैन शेयर, आई थिंक। हम्म, ट्राई करो। मेरे को शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा। एक सेकंड में दोबारा से, अब देखो। नहीं है, चलो मैं होस्ट बना देता हूँ आपको।
देखो। अभी भी सेम इशू आ रहा है. नहीं, मैंने होस्ट बना दिया, नाउ यू आर द होस्ट। I can see that. Yeah. हुआ नहीं तो आई कैन शेयर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। वही ऑप्शन ही आ रहा. या तो I can try joining from another device. That might help. If you can share, then that's the best, I guess. फिर आप host भी रहोगे. हम्म। होस्ट अभी आप ही हो। आप मेरे को होस्ट भी बना दो, मैं वैसे शेयर Okay. नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। Hmm. Perfect. कोई नहीं, अब आप स्टार्ट करो, मैंने ले लिया होस्ट का राइट, होस्टिंग राइट्स। हाँ जी. So yes, firstly, just 6 months are left before we have our CLAT. So it is definitely, matlab things start to feel real. During my time, what had happened was कि, as you know, I was preparing for a very very long time. तो मेरे लिए तो when this sort of feeling started kicking कि okay, the day is finally here. मतलब जब 6 months बचे थे, तो it just felt very very real. Um, So, but like right now, firstly, I'd like to understand that what all of you are um, facing. If anyone would like to add, ki what's up, like what are they facing, ये सब कुछ. So, yeah, anyone who wants to add something? Any raise of hands? Anyone can raise their hand, and yes, we can. I guess it just feels overwhelming sometimes Hmm. that Makes sense. you have this image of you going to college, sitting in a lecture hall doing law, and then everything relies on just like one major exam that happens once a year. So there's a lot of pressure on that. Also, like Hmm. it's said that we shouldn't align ourselves to mock scores, but in these last 6 months, every mock score kind of affects us. It shouldn't, I know, but thoda sa it's tough to not feel connected to the score because it feels that every score is your result that way. Definitely, it's very normal to feel such a way. Um, But yes, the point is कि if we get so much attached to the result or anything, then matlab for every mock, it is not something which is nice in general. But yes, this is exactly what I was feeling. Maybe in fact a little bit more overwhelmed because of the fact कि मेरे लिए तो मतलब मेरे लिए हमेशा preparation was like oh 3 साल बचे हैं 2 साल बचे हैं. When it actually felt कि okay 6 months बचे हैं and I know कि this is the time when majority of CLAT aspirants actually start putting in effort. मतलब up until now मेरे को एक थोड़ा realization था कि to a great extent I was competing with people who are not that serious when it comes to mocks because I used to get like very good ranks and crazy scores in the mocks and when you put it on the website you're getting like a very nice rank and everything. But then so I had that realization कि now people start putting more effort. अब कहीं ना कहीं जो रैंक ऐसे बहुत अच्छी और एकदम शाइनिंग रैंक आ रही थी वो कहीं ना कहीं गिरेगी क्योंकि now people start putting in more effort and so yes, competition essentially rises. Now I'll see the real competition for clan. So all these things were in my head, and yes, that did affect my preparation to some extent because when you put so much into your head, obviously there's no like good side to it. So yeah, that happened. But the point of the session, and also one major thing that if you had to take away from the session, would be key not to be overwhelmed in that sense. It is completely fine what you're facing right now. So and the point is key, although yes, this feeling is very true as he put it कि एक साल में एक बार एग्जाम आता है मैटर करता ही है कि कौन से कॉलेज में जा रहे हो राइट एंड इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो but the point is कि despite all this you don't have to like you don't have to repeat these thoughts again and again to yourself.
You just actually just have to see it as a very fun exam, and just like a duty, just like an obligation कि अब तो बस वो पेपर देना है. No feelings attached. I know it's very very easy for me to say and very difficult कि तुम मतलब ऐसे implement कर पाओगे वो एक person की. But the reality is that at some point in time you really have to develop this mindset. For some people, like they're just born that, you know, their preparation starts off with that कि ये तो फर्क नहीं पड़ता. जैसे I know Adya, one of my batchmates, and we prepared together. So उसका starting से obviously she had put in a lot of efforts, but starting से like वो उतनी भी ज्यादा connected नहीं थी या फिर emotional नहीं थी about CLAT जितने बाकी normal aspirants होते हैं. And that played to a huge advantage for us because because of this she was very chill when she went into a mock. And this is same for, like, this is same what she replicated in the paper, that she was very essentially chill, right? And that does, like, that helps a lot. So इसलिए right now धीरे धीरे start to condition yourself for the real paper. That means कि you now need to understand कि how do you stay emotionally detached to this paper, to the result. So yes, now with every mock, that's a test कि how you do not let emotions take the better of you. Also, this is the time when you have to put in more effort, because एक तो करंट अफेयर्स अब के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मतलब इन माय एक्सपीरियंस मेजरली 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स अगर तुम अच्छे से करके चले जाओ, यू आर ऑल सॉर्टेड फॉर क्लैट एलिट. सो अगर तुम्हें 6 महीने के करंट अफेयर्स, सो नाउ इज द टाइम जो अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू हो रहा है. So it's very, very important that you start following newspaper. So and following current affairs while at the same time improving mock scores. And I'm pretty sure a lot of you have not even touched math, so maybe start doing that. So there's a lot to manage, right? There's a lot to balance. And now missing a day, पहले it would have been relatively fine कि ठीक है एक दिन miss कर दिया. I guess yes, we can move on to the next slide. But yes, पहले ऐसा होता कि अगर एक दिन मिस कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है, मतलब कवर हो ही जाएगा कि जीके एक दिन मिस भी कर लिया तो मतलब फर्क नहीं पड़ता अभी कि जीके कहाँ आ रही है. पर अब वैसा नहीं है. एक एक दिन का जीके अगर आप छोड़ रहे हो तो अगले दिन को बैकलैग बन जाता है फिर. सो एसेंशियली नाउ टेकिंग अ ब्रेक इज आल्सो मच मोर डिफिकल्ट एज compared टू बिफोर. So now is the time when you actually have to put in sincere efforts on a daily basis. Not a single day essentially you can miss. Obviously breaks are important. kabhi kabhar it will be needed, but majorly try not to like um, not to take much breaks. Just take like what I used to do is just Sunday ko um was my break day kind of. And every week and but that too means कि मैं उस दिन एटली न्यूज़पेपर और एक मॉक तो कर ही रहा था. So even break का definition has to change now. But yes, the 5 things that we are going to focus on today: number one is concepts plus subject, where to study what and all that. And also this session is made from that perspective that even if you're not started your preparation, you will be sorted. So yeah, that is there. And also it's like one question which majority of you will have is how many mocks to give. And then third is definitely PYPs, and I'll tell you specifically how previous year papers helped me a lot. मतलब मेरी preparation में तो it had like a very very big role. So we'll talk about that as well. And then comparison factors. So um, you know, this time around अभी तो जैसे I very fondly remember जैसे CL मतलब what used to happen was that I used to put in my scores on a website, and that website would give me my rank. Essentially my rank in starting would be like single digit, या फिर 15 16 something like this, and I used to feel very confident that yes, now I'm doing well and सब कुछ. um and now once this 6 month period started, I remember there was like 3 महीने जब बचे होते पेपर के लिए, I once again did that. I put in my results in that website, and I find that जितना मेरा पेपर अच्छा था तो उससे मच बेटर गया. और मेरे हिसाब से पेपर वेंट रियली वेल कि इससे ज्यादा इस पेपर में इतना अच्छा कर नहीं सकते थे मॉक में. बट माई रैंक इन दैट पेपर वाज लाइक 800 900. दैट आई कुड नॉट गेट कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ. तो वील ऑल्सो टॉक अबाउट ऑल दैट कि हाउ एट टाइम्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड होती है मार्क्स स्कोर्स ये सब. एंड तुम्हारे रैंक्स आर नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू विल गेट इन मॉक, in the paper, sorry.
So yes, we'll talk about those unhealthy factors as well, and then definitely study groups and mentorship. So I'll tell you about my mentor and my study group. But yes, so that is majorly what we'll cover. Um, Firstly, yes, what to study and where. So majorly, if you look at it, we have five sections, right? We have logical, legal, English, GK, and maths. Now, if like I'll just list all the sources and be like 100% transparent with you guys कि मैंने क्या क्या करा था. So for logical, let's divide it into two parts: critical reasoning and analytical reasoning. Critical reasoning I did firstly. I started off with previous year questions क्योंकि and for every subject but majorly CR में it helped me a lot क्योंकि वो सॉल्व करके समझ में आया कि एग्जैक्टली चाहिए क्या कि स्ट्रेंथ एंड वीकेंड के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं अब वो मेरे को जब मैंने पहली बार देखा था इट वाज आई वाज वेरी न्यू टू देम राइट सो मेरे को इतना नहीं समझ में आया सो आई अंडरस्टूड कि ओके दीज आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई नीड टू नो बिफोर आई एक्चुअली गेट टू सॉल्विंग दिस तो वो कॉन्सेप्ट्स मैंने कहाँ से करे देयर इज अ बुक कॉल्ड विली GMAT Bible, matlab that's the whole name of the book, Critical Reasoning by Willy. And so I did that. Second, I did GMAT Bible के questions of English section and उनका जो English है उसमें they have strength and weaken ये सब कुछ and also उनका critical वाला part. So I just did all the questions which were there in GMAT Bible. Now I'll one caveat here. So PYP CLAT level was this, GMAT was Willy was this, and GMAT was this. So definitely levels में बहुत ज़्यादा फर्क था. तो you need to be aware of that. But still I practice GMAT वाले अच्छे से because I was like कि GMAT अगर अच्छे से कर लिया GMAT के क्वेश्चन अगर तुम्हारे 100% एक्यूरेसी से सॉल्व हो रहे हैं फिर 80-90% एक्यूरेसी से सॉल्व हो रहे हैं तो यू कैन बी श्योर कि क्लैट तो तुम आराम से करोगे so for that confidence and for that clarity of thought, I did GMAT Bible, right? And once I did that, and I do after some time, I like started getting very good at it. एक तो आई प्रैक्टिस लॉट ऑफ टाइम्स तो मेरी एक्यूरेसी उसमें अच्छी हो गई थी अब बात ये थी कि जीमैट में इतनी प्रैक्टिस कर चुका था मुझे अगेन उसमें क्वेश्चन इशू हो रहा था कि मेरे को आंसर्स ही आते तो अब आई ऑल्दो आई वाज लाइक ठीक है अगर तुम्हें आंसर्स भी याद हो सेम क्वेश्चन को बार बार करना हेल्प्स क्योंकि वो जो लॉजिक है वो थोड़ा इंग्रेन होता है पर आई थॉट कि मुझे अब और सोर्सेज भी चाहिए जहाँ पे मैं थोड़े और अपने मतलब मेरे को लॉजिक इनका एग्जैक्टली पता है इन क्वेश्चंस का तो आई नीड सर्टेन न्यू क्वेश्चन जहाँ पे मैं अपने जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई कर पाऊँ जहाँ पे मेरे को लॉजिक ना पता हो बट ऑफ सिमिलर नेचर तो आई एंड और अ बिट हायर सो आई केम अक्रॉस दिस बुक कॉल्ड एज अरुण शर्मा विच इज फॉर कैट CAT is a PG level examination for IIMs and all, right? But I लाइक प्रिपेयर्ड उस बुक से जो कैट के लिए यूज होती है और अरुण शर्मा आई गेस इज लाइक द स्टैंडर्ड सोर्स फॉर क्लैट आई एम नॉट श्योर बट फॉर क्लैट इट वाज वेरी हेल्पफुल सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट उसमें बहुत अच्छी चीज ये थी कि उसमें लेवल्स में बटे हुए थे क्वेश्चंस कि देवर 1 to 7 लेवल तक सो 7 इज लाइक कैट के हिसाब से भी मुश्किल आई गेस 3 और 4 पे दे यूज्ड टू से दैट्स लाइक कैट लेवल तो आई सॉल्व्ड ऑल दैट एज वेल एंड उसमें भी देयर वाज लाइक अ थियोरेटिकल कंपोनेंट जिसमें और उसमें बेस्ट पार्ट ये था एक्सप्लेनेशन तो वेरी वेरी गुड सो विद दिस वे आई वाज वेरी गुड विद कैट एंड जीमैट क्रिटिकल रीजनिंग सो आई थॉट कि ओके नाउ आई एम जस्ट लाइक गोइंग टू किल इट इन क्लैट वाली रीजनिंग एंड ये सब कुछ and when I gave mocks, so at that time, 30 marks used to be critical reasoning around a section. I used to score like 25, 26. And when I started this GMAT CAT one, I think before that I was like 25, 26. So I thought कि अब तो it'll be 28, 29. I'll hardly maybe get a question wrong because I've practiced so many times. I've practiced so much difficult questions. So CLAT तो क्या ही है? So I started giving the mocks. But to my surprise, my scores actually dropped from 25, 26 to I went to 21, 20, 18. And then I was like कि ठीक है मतलब एक मॉक में लगा मॉक डिफिकल्ट होगा गलत होगा फिर दो तीन चार फिर समझ में पैटर्न है कि कुछ तो हमारे में गलती है फिर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग इट वेरी डीपली पुराने मॉक्स पे एनालाइज करे तो आई अंडरस्टूड वन थिंग कैट जीमैट में देयर आर परफेक्ट आंसर्स कि जो ऑप्शन बी उसने करेक्ट बोला हुआ है देयर इज नो वे दैट यू कैन क्वेश्चन इट सो कैट जीमैट essentially becomes much easier in my like according to me as compared to CLAT क्योंकि उसमें ना तुम्हें क्या करना होता है वंस हाँ इट इज हार्ड कॉन्सेप्ट वाइज इट इज हार्ड लॉजिक वाइज इट इज हार्ड कि पैरा मतलब बहुत ज्यादा वर्ड रीडिंग करनी पड़ती है बहुत कम टाइम में बट अगर तुम्हें वो एक बार लॉजिक समझ में आ जाए और तुम्हारी रीडिंग स्पीड उतनी कंफर्टेबल हो जाओ तो क्लैट मुझे ज्यादा मुश्किल लगता है क्यों क्योंकि कैट में क्या होता है परफेक्ट आंसर है तो अगर एक भी
ऑप्शन को तुम एक भी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो, कुछ भी एक रीजन लगा के कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यू एलिमिनेट दैट, तुम उसे दोबारा नहीं देखते। क्लैट में परफेक्ट आंसर्स नहीं होते, क्लोज टू परफेक्ट आंसर्स। तो में क्या होता है कि ऑप्शन बी, जैसे मैं कैट वाला लॉजिक यूज करके कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जिससे वो एलिमिनेट हो रहा है, तो मैं उसे एलिमिनेट कर दूंगा। कैट में इट माइट वर्क, क्योंकि हाँ, वहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको आप किस तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्लैट में ऐसा कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, फिर तुम्हें चूज करना होता है फ्रॉम लाइक क्लोजेस्ट टू परफेक्ट आंसर। सो दैट्स व्हाई क्लैट का स्किल इज नॉट टू, इज लाइक थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम कैट का स्किल। बट यस, कैट एंड जीमैट वाला स्किल अगर एक बार आप अच्छे से डेवलप कर लो, तो दैट हेल्प्स यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड ऑल्सो देयर इज अ चांस दैट tomorrow they might ask something cat level in clat, and then a lot of people will not be able to answer and you'll be able to answer. So definitely it helped, and but it definitely took some amount of time to come back to that clat wale reasoning as well. But once I was back to the clat wale reasoning, I was very perfect, and I was like very like scoring very good in critical, especially because now I was clear with cat wale concepts as well, gmat wale concepts were especially very clear, reading speed बहुत अच्छी हो गई थी, तो मैं आराम से सब सॉल्व कर पा रहा था। पर yes, a caveat है, this is like I did this over 2 years, ये टू मतलब 11th अराउंड में I had maybe started critical reasoning अच्छे से करना। I remember 11th के जब फाइनल्स वगैरह थे तब मैंने अपना अरुण शर्मा वगैरह शुरू करा था। तो this is me before 12th sort of started, but with 6 months in hand, maybe it's not the best way to go about it. So what I'll suggest is for 6 months, if you're starting from scratch, then maybe go for GMAT, Bible के questions and Willy. Just do these two. You can safely skip cat Wali book and maybe do like, but yes, one thing, mocks should be very consistently done. Second is definitely analytical. For analytical, I will be honest, I did not put in बहुत ज़्यादा effort because study anchor में बार बार मतलब एनालिटिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है और वो बार बार सेम क्लासेस मतलब सेम टॉपिक्स इतनी बार करवाए जाते हैं कि I did not have to put in a lot of effort. I knew the topic, I just had to practice it. For practicing, I used M.K. Pandey. And there's another Aryant ki one book for analytical reasoning. So I just used that for practice. And if I had any doubts, I'll just go back to the teachers, Weber sir majorly. So that is what I did. Analytical is that I did not have to put in too much effort. Then second, legal reasoning. So legal reasoning में one thing which we have to realize is during my time थोड़ा different था मतलब क्योंकि they were following their pattern, they were following what they said. What that essentially was key, we are not testing you for lawyers, we are testing you, so we will not test you on law, we'll just test you on legal application. So we'll give you the law there, we'll give you the fact there, you apply. That is what we'll test. तो आई अंडरस्टूड कि जो बच्चे लॉ पढ़ते हैं ना बैठ के कि कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है, ये सब पढ़ने बैठ जाते हैं क्लाट के टाइम में, वो इतना हेल्पफुल नहीं है। तो आई नेवर डिड दैट, मैंने कभी टॉर्च नहीं पढ़े, मैंने कभी क्रिम ऐसे नहीं पढ़ा था। आई डिड दैट व्हेन आई गॉट इनटू लॉ स्कूल, बिफोर दैट आई डिड नॉट। So, but yes, now थोड़ा सा time has changed. Um, last year, last to last year they had like पूरे core legal questions, contract के थोड़े, तो इसलिए it makes sense कि थोड़ा वो legal cover कर लो. But the way my preparation went, so I could have even answered those questions, although I did not specifically study them. This is because I just practiced so many passages, and like legal is something I did just for mocks, and I did so many mocks that मेरे लिए वो passages भी सेम होने लग गए थे। तो उसके बाद आफ्टर वन पॉइंट इन टाइम मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के जो नॉर्मल पैसेजेस होते थे याद ही थे, तो मेरे को लॉ याद हो गया था। तो आज सच अगर क्वेश्चन वैसे भी आते तो आई कुड हैव आंसर्ड देम, although contracts are like was very tricky, and sort of borderline wrong, so वो उसका exception, but उसके अलावा अगर कोई normal question आता I would have solved. So but with 6 months what I'll suggest is give as many mocks as possible for legal. After one point in time passages also start repeating them, so that's fine, that's good. And secondly, start reading IP leaders, bar and bench legal, some like legal opinions on daily basis. And also अगर हिंदू में एक कोई legal opinion कोई चीज आ रही है which is almost every day, so do not skip that for sure. So that is majorly how I did legal. For QA, that is maths, I procrastinated a lot in that. I extended it to a very late time. मतलब जब मैंने ऐसे अच्छे से बैठ के ट्रिक्स वगैरह के साथ मैथ्स करा, that was 6-7 months before only. तो इसलिए दैट इज परफेक्ट टाइम, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 दिन लगेंगे तुम्हें मैथ्स कंप्लीट करने के लिए। सो आई जस्ट यूज क्लासेस एट स्टडी एंकर एंड माय नॉर्मल मैथ्स मटेरियल,
and this book called 30 Day Wonder to Maths. So yes, that is what I did for QA. Then on to GK. GK class I did newspaper every day. I did one monthly compendium and I made notes over and above that monthly compendium. What that essentially means is कि मैं उसके भी ऊपर नोट्स बनाता था कि अगर जैसे नासा उसमें सिर्फ एक बार मेंशन्ड है कि जैसे इसरो की कोई न्यूज़ है उसमें थोड़ा मेंशन है कि नासा ने भी ये ट्राई करा था कुछ साल पहले, तो मैं नासा भी अच्छे से फिर पढ़ूंगा कि नासा कब बना, कौन फाउंडर, मतलब फर्स्ट फीमेल हेड, मेल हेड, करंट हेड, इंडियंस इन नासा, ऐसी ऐसी चीजें तो मैं अच्छे से करता, तो इसलिए एक मंथली कंपेंडियम अगर 200 पेज की होती थी, माई नोट्स वुड बी स्लाइटली मोर देन दैट because I would cover more things. So that's what I did, क्योंकि इससे मेरा इंक्विजिटिविटी भी मेंटेन रहता था और एक बार के लिए सारे टॉपिक्स हो जाते थे. So my point was just to find a source for GK which will have all diverse topics. So yes, that is majorly my uh, way of preparing sources. Does anyone have any questions at this point in time? So may I ask one? Yeah, go ahead. So I had doubt regarding static GK ke resources. For example, where to find concise and precise sources. Like recently, Mughal Empire completed 500 years. So I went to Vision I Expect video, and at the end of the video, I only felt that ये ज़्यादा ही हो गया है. So how to make it very precise and to the point. That is actually a very good question and makes sense given how CLAT is evolving. So, firstly, I'll tell you what I did during my time, and secondly, what I would suggest now. So, during my time, I had done Lucent GK way back in like पहले ही 9 8 में पहले अराउंड कुछ करा होगा. सो यस दैट वाज देयर. तो मेरे को एक थोड़ा जीके का बैकग्राउंड था एंड इन जनरल आई वाज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट. सो थोड़ा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब, मतलब चाहे मैंने 11th 12th में ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं थी फॉर स्कूल, लाइक आई यूज्ड टू प्रिपेयर वन नाइट बिफोर एग्जाम, बट ठीक ठाक मेरे को आइडिया हो गया था उससे जो जानना चाहिए चीज़ें. And so that is like that, these two things were to my advantage there. And for static, what I used to do essentially was link it with the current topic. So if Mughal Empire 500 completing is in news, then I'll go and study about Mughal Empire. So when I told you ki I would just take up a compendium and then make like notes up over and above that, that is essentially a part of it. कि अगर मंथली कंपेंडियम में लिखा है कि ये एक टॉपिक गिवन है, तो मैं थोड़ा और उसके बारे में रिसर्च करूंगा, मुगल एम्पायर से अपने लाइक अपने आप से रिसर्च करूंगा. And one thing which I had was I was good at predicting GK questions in this sense कि I knew कि क्या आ सकता है, क्या है सब कुछ, and I was just very inquisitive. Although I did not know the answers to certain things, but I knew the right questions to ask. So that was there. Um, and the way I used to read a new topic or anything like this was जैसे 500 years of Mughal Empire is in news. So I'll go and do Mughal Empire uh, UPSC and then like 2 3 जो top websites आएंगी वो. That is something that I would do. Um, but unfortunately, that like not unfortunately, sorry, fortunately now things are much better because of AI. With AI, you can make like much more precise notes. So the way I would recommend doing that is, if they again 500 years of Mughal Empire is in use, what you do is you um, take up the search the same thing on UPSC wala ye sab kuch, even that Vijay's video that you said. Paste a link to that video in Notebook LM. Take all the top 10 sources or anything that you come across, and yes, add all that in Notebook LM. And once you have done that, just ask it to make very precise notes which focus on objective things which might come for CLAT. So I have made like a prompt as well for this, and I had shared in the last GK class as well. So just make a very nice prompt and then just put it there, and then it will make uh, very nice notes in that respect. So that is how like I would do it now with like AI being there. So essentially, I will not go and find, or I'll not suggest you, ki, okay, this is one source, just do this. I'd rather suggest you that make your own precise notes from AI. So yeah, that is my suggestion. I guess Mudaddiya has anything to add, right? उसमें एक सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि आई टेल एवरीवन कि आप एक कोई भी बेसिक
स्टैटिक जीके की बुक को पढ़ के रखा करो। तो इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी, वो लूसेंट करके जो बुक है दैट इज अ लिटिल टू बिग आई थिंक, और इवन पियर्सन की बुक इज वो थोड़ी सी बड़ी है। बट इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, अ बुक लाइक अरिहंत और ये आपको एटलीस्ट एक कोई भी स्ट्रैटेजी की बुक कवर करनी चाहिए। तो उसके अंदर जो भी आपको मिलेगा, इफ यू टॉकिंग अबाउट द मुगल एम्पायर, they will give you the whole historical timeline of the Mughal Empire. They'll give you who the rulers were. Like सबसे पहले 1526 में इब्राहिम लोदी एंड बाबर की फाइट हुई थी, जहां से द मुगल एम्पायर स्टार्टेड। सो ये बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। एंड उसके बाद दे लास्ट क्योंकि हु वाज द एम्परर आफ्टर बाबर, एंड वो फिर पूरे उनके लिनिएज पूछेंगे, एंड उसमें टाइमलाइन में दे टॉक अबाउट कब कब कौन सी बैटल्स हुई थी। तो स्टैटिक जी के बुक वुड कवर ऑल ऑफ दिस। बट यस, जैसे कनम ने बोला कि यस आपको वो प्रॉम्प्ट पता होना चाहिए दैट यू कैन गिव। लाइक देयर इज अनदर थिंग, आप चैट जीपीटी पे वेब सर्च ऑप्शन ऑन कर सकते हो। वंस यू click the web search option on and you tell ChatGPT that I want to know all the important necessary information about Mughal Empire, which is important for examination like CLAT, तो वो फिर भी आपको बहुत अच्छे से सारी कंसाइज इंफॉर्मेशन दे देगा। एंड टेल चैट जीपीटी गिव मी प्रॉपर रिसोर्सेज फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड यू कैन डू द सेम थिंग ऑन जेमिनाई ऑल्सो। तो एआई के अंदर कितना भी जाके आप ये चीज कर सकते हो, जस्ट नीड टू फाइंड वन वे जो आपको प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। बट इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एआई, देन कोई भी एक स्टैटिक जीके बुक कवर करके रखो, दैट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव एंड लॉट ऑफ आइडिया कि कितना स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एटलीस्ट वो बेस तो हो जाएगा, वरना ऑनेस्टली देयर इज नो एंड टू स्टैटिक जीके। एंड आइडियली स्टैटिक जीके को कितना ही करते रहो, कितना ही करते रहो, कितना, देयर इज नो लिमिट। ठीक है, ठीक है कनव, अब स्टार्ट करो, मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ जी भैया. But yes, so I hope that answers your question. Yes, sir. Thank you so much. Perfect. Also, any other question that anyone else has? So can I ask one more? Anyone Can else I has ask one anything? more? Yeah, So no. what is a quicker Yeah. way to do CRK passages? Like I'm good at CR, I do GMAT club. But in English, like I go about the questions first because that really helps me become quick with the section. But CR में ऐसे आ जाता है that which of the following inferences can you get from the passage? So the question does not explicitly mention कि passage में कौन से part से वो पूछ रहा है. That happens at times. It asks in a very generalized manner. So like, is there any way to make that quick? So yeah, there are different ways to solve different passages, right? For English, it makes sense to go through question first. But I had like this one strategy. Essentially, my strategy is for English and CR to go through questions. Jitna zyada questions I can go through, that's much better. Because if you say that inference wala part, which of the following is is a valid inference from the passage, in that sense there are four options now. Ideally you should be able to go through all four of those, because उससे idea हो जाएगा कि exactly कौन से part of passage you have to focus on. If all those four inferences are actually talking about one specific part of the passage, say like I remember this CLAT 2022 ka passage was on how oil is important for global economy and how US and all they are going behind it. So one of the questions that was there was around, so it had mentioned one thing ki even during World War II, Germany lost because they did not have access to oil. So that is one part which it gave. So one inference or something question was based out on that specific part of the passage. Now it's like a 500, 600 word passage, and essentially you need to emphasize on that. So how would you know that? Is through possible, except obviously vocab wale. For Seer, what it did was if it read key which of the following is a valid inference from and gave a sentence or gave a part key about say World War II and oil, then I would not go through the four options because I would know the genre that it is out of from, and I would just then focus on that genre or part from passage. Similarly, strengthen and weaken I would not go through अगर उसमें specifically given है कि genre क्या है, या फिर बहुत बार line ही given होती है कि इस line से क्या inference बना सकते हो, इस line से क्या strengthen and weaken, then I would definitely not go through that question, save on those extra 5 6 seconds and put it into the passage only. And but if it was a very general question key which is a valid inference or something like that, without any genre mentioned or without any specific line given, then I would go through all those four options, because that is comfortable, like needed as well. And also
this was at such a state that like when I gave the paper, my reading speed was like very good. So I was very comfortable when it came to all these things. It was fine. I had enough time कि मैं मतलब my reading speed was good enough कि मैं questions पढ़ के भी आराम से पैसे दे सकता हूँ, फिर उसके बाद भी आ जाऊँ, तो बस टाइम होता था. And in fact, I was able to complete my ELIT का paper 20 minutes before time. So I essentially came from a position of comfort in that sense because of putting in many years and so much time and just having a good reading speed. So if you are someone in the same bracket, then it's definitely very helpful and you can focus on and you can have this strategy. But if you're someone who's a bit low on reading speed, slower on the slower side, then it maybe makes sense to be more frugal when it comes to maybe going through questions or not. So with my reading speed come, you might skip on reading a few questions and rather go into the passage and taking a risk. So yes, that is pretty much it. Make sense? Yes, sir. Thank you. Perfect. Okay. Now on to this part. How many mocks are enough? Although I know you've read the slide and the opinion, but what do you guys think? How many mocks will you give in the next 6 months? Like, what is your current average? Maybe you can write in chat, or you can also like raise a hands. So yeah, any like anyone. You can write in chat as well. Yeah, फिर you can show of hands. Yeah. 2 mocks per week. That is essentially um 48 mocks. So 3 mocks a week, bit better. Okay, 80 total. Nice. Um, if you had to like guess that how many, so see, ideally, तो मतलब there's no ideal to it, honestly. The idea is कि there might be a minimum, but there's no maximum to it. There are people who will give 1 mock a day till the paper is there. Right. I was one of those persons जिसने बहुत ज़्यादा benefited out of giving 1 mock a week. But again, that is coming from a position of comfort in the sense that my syllabus was complete. I had nothing to do in CLAT preparation in general, but just giving mocks. So that is why मेरा whole मतलब I had done so like GMAT, CAT, these things so many times कि I essentially had nothing left to do कुछ जो नया हो जो sources बचे हो. That's why I used to give a lot of mocks. Um, and that is why I gave mocks like on a daily basis after I guess I started around June only. So in June I started 1 mock a day. So and I benefited a lot out of it क्योंकि मैं like कभी ऐसे during paper focus issues या फिर ये सब होना बंद हो गया था because I was practicing this thing so many times that 2 hours में condition yourself give the paper ये सब कुछ. So इसलिए I to like give a lot of mocks. So there's no higher limit to it. You can give as many as you think that your time would allow and also would not affect you. For a lot of people it does happen कि रोज मॉक देना would fatigue you and फिर तुम prepare नहीं कर पा रहे अच्छे से. So yes, it's like based on different levels of like just how much efforts you can put in, right? So just ensure that find a suitable or like a comfortable pace of mocks which you can maintain over like over a week or over 6 months and which does not fatigue you but at the same time is actually the best effort that you can put in. So yes, that is very important. um so yes, that being said, but essentially 60 mocks is something that you should do. 60 is essentially what, 10 mocks a month, which is genuinely not a lot. That boils down to like giving 1 mock in every 3 days. So ideally, if you want to get like a top 100 rank, then for sure, minimum 60 should be there. Um, but yes, again, this is not like explicit rule or something कि 60 के नीचे हो नहीं सकता. There are people who crack it with just by giving 5 6 mocks as well. There's a friend of mine who never heard of syllogisms and did them for the first time one day before ALET and the other day when he gave the paper and ALET was like all syllogisms and he got a very good rank and he cleared the paper. So that also happens. But yes, one question, sir. But coaching give only 1 mock per week. Okay.
So that's why you go for many coachings. Like you cover mocks from different coachings. I would have given mocks of all coachings possible, which were famous at that time. So yes, do not restrict yourself to one just one coaching. And rather I'll suggest कि you थोड़ा सा diversify, because every कोचिंग का मॉक विल हैव सम सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव टू इट, राइट? इट्स बेटर कि अलग अलग टाइप के ओपिनियंस, अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज आप सीखो, अलग अलग अप्रोचेस टू क्वेश्चंस आप सीखो, अलग अलग कोचिंग के पेपर्स देखिए, उससे आपको ये समझ में आएगा कि डाइवर्सिटी होती है। जैसे फॉर मी इट हैड कम टू सच अ पॉइंट कि आई वुड बी लाइक कि ओके, अगर ये क्वेश्चन कोचिंग ए के मॉक में आना है तो ऐसे आंसर करना है, कोचिंग बी के मॉक में आएगा तो ऐसे आंसर करना है, और अगर क्लैट पेपर में आया तो ऐसे आंसर करना है। सो बिकॉज मैं इतनी बार समझ गया था कि उनका पैटर्न क्या है। सो इट्स ऑल अबाउट क्लैड इज जस्ट अ गेम ऑफ पैटर्न recognition, nothing else. So yes, I would suggest giving like different coaching scheme mocks. And also, shall I go for mocks even if my syllabus is not done? Definitely yes. 6 months are left, so go for the mocks. And क्लैट essentially does not have a syllabus, ठीक है? इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल, लॉजिकल के कॉन्सेप्ट आएंगे तो उतने अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाता है फिर भी, और इनफैक्ट क्या पता आप ऐसी मॉक्स से कर करके सीखो। सो इसलिए डू नॉट, यस, लाइक नॉट completing the syllabus per se, do not let that be a issue. So yeah, um that would be my advice. Yes, now decode the real pattern. Yeah, previous year paper. How many of you have given previous year papers, like attempted once at least? Any, like अपने एक साल पहले वाला paper at least? Raise of hands. For some reason, I can't see raise of hands as well. But yes, okay, I can now. That's good now, but a lot of you have not started with previous year papers. So ideally, it should be the first thing that you do. And I have practiced previous year papers over and over again. Whenever I would come back from a break, came back from a trip, feeling guilty कि क्लैट के लिए कुछ नहीं करा, I would start off with previous year papers. So that is why I've like given it so many times. And I would solve it like sectionals as well, कोई करके logical का बस logical करा 20 मिनट में, ऐसे करा सब, ऑल्दो आंसर्स रट गए थे एट वन पॉइंट इन टाइम। बट अगेन वो पैटर्न रिकग्निशन में हेल्प करता है, क्योंकि एक चीज को अगर बार बार देख रहे हो तो कहीं यू स्टार्ट डेवलपिंग पैटर्न्स कि ये क्यों आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है, एंड देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई दैट ऑन फ्लैट का डे। So yes, definitely give a lot of PYPs. Can't emphasize it enough. चाहे sections की तरह दो, चाहे पांच पांच क्वेश्चन करके दो, मतलब एक एक पैसेज करके देखो, पर एटलीस्ट लाइक मेरे क्लैट 2021 से लेके अब तक के पेपर्स अच्छे से आपको करने चाहिए। आइडली एट सच अ लेवल कि अगर इफ आई जस्ट रैंडमली पुल अप क्वेश्चन टू यू, यू शुड नो कि ओ ये उस पैसेज से था, इसमें ये आंसर है और क्यों आंसर था, विदाउट इवन रीडिंग द पैसेज। Like that should be the goal कि इतनी बार अपने को familiarize कर लिया PYP से। And trust me, it's like doing one previous year paper अच्छे से is equivalent to maybe giving like 30-40 mocks. It's that helpful. So definitely focus on PYPs. And one more reason as to why PYP helps. So a lot of times it would happen कि I would give mocks and I did fine, but not like a lot of people did better than me. एंड देन आई वुड बी लाइक इन दिस थॉट कि या फिर उस पेपर में अच्छा नहीं कर पाया उस मॉक में, एंड देन आई वुड हैव दीस थॉट्स कि ओ विल आई बी एबल टू परफॉर्म इन द रियल पेपर और नॉट, ये सब कुछ। बट देन सॉल्विंग पीवाईपीज वुड जस्ट लाइक रीइग्नाइट द कॉन्फिडेंस दैट आई हैड। सो इसलिए, एंड दैट इज लाइक द ट्रू टेस्ट, राइट, कि पीवाईपी अगर कर पाए तो अपने साल वाला पेपर भी कर पाओगे। सो यस, दैट यू शुड टेक केयर ऑफ। And इसलिए PYPs are very, very essential. And maybe after a bad mock, feeling bad or something like that, then just go back to a PYP. When you solve it, then that confidence which you need will get reignited. So इसलिए maybe yes, PYPs is something that you should do, and past 5 years very, very essential. And although even if it's 150 wali bhi, give those as well. But अच्छे से do all the PYPs that are there. Um, ये ओके, सो 2026 का जैसे आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो फिर देन गिव 2025, 24, ये सब, और बट बार बार उन्हीं को दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करो, इट विल हेल्प।
So although answers रट जाएंगे, as I'm saying, I know कि answers रट जाते हैं कि option वगैरह में, but still एक बार, even if your mind knows that it's option B, still like let your mind figure out why option B. Focus on the why, even if you know कि that is the answer. That helps you again develop that pattern recognition which is needed, and also reaffirm the logic which you have in your mind. सो एंड ऑल्सो बहुत बार ऐसे होगा कि जब तुम बार बार प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो तुम्हें पता है कि क्वेश्चन क्या है। एक पैसेज में पिछले बार तुमने पैसेज करा, फिर तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जो तुम्हारा गलत हो गया, तुम्हें वो याद है या फिर सही भी हो गया, वो तुम्हें अब क्वेश्चन भी याद है। तो जब तुम पैसेज पढ़ रहे हो तब यू विल कम अक्रॉस न्यू हिंट्स व्हाई दैट आंसर वाज करेक्ट, and that way you understand कि in CLAT a lot of times there are like 3-4 reasons in a passage as to why one option is correct, and how do you identify those, and in paper you just have to identify one out of those 3 or 4, and your job will be done. So essentially you develop new strategies, new approach, and new way to look at the paper. So say PYPs are like completely essential. If I had to like all sources listed, and if I had to give like credit key why I was able to make it to an LUD with such a rank, it would be 80% PYPs, 20% rest of it. Genuinely, like it's that helpful. Like can't emphasize it enough. What do you mean by pattern? Like pattern should we look for? So pattern as in why CLAT in like अब जैसे it is like a certain pickle or certain genre of questions. In such genre or such trap, what option CLAT goes with? That is a pattern. So like this happens with every paper. There's like a certain way to answer questions. अब जैसे अगर if I give you very ऐसे law school example, so law school में क्या होता है, they give us fact scenarios and उस पे हमें law apply करना होता है, but unlike CLAT हमें law paper में नहीं लिखा होता, हमें law याद करके मतलब पहले वैसे पढ़ाते हैं। तो अब we know कि जैसे if I give you an example about let's just take data protection laws or something like that, and there's a question about data deletion कि कब delete करना चाहिए data. Because I solved those questions so many times, I would know कि CLAT would go for this option in data deletion. Like they would rather usually favor data deletion. At times you'll understand कि English में there are like liberal answers which they go with rather than conservative answers. So these are certain patterns, and like these patterns are something which become apparent to you once you start actually doing PYPs again and again. So yes, it's like a holy grail of CLAT which only becomes visible after you put in so much effort. So yeah. That is there. Maybe you can move on to the next slide. If anyone has any other questions about this, just Hello. raise a. Yep. I had a doubt. Yeah. You said that CLAT was basically a game of patterns, but Mm. from the past 2 years, the patterns have really changed. So, what do you do when the pattern becomes unpredictable? Um, I mean like pattern. You mean pattern within the question, or exam pattern broadly? कि क्या क्या वो पूछ रहे हैं, something like that. Both, I guess. Okay. So firstly, although the broader pattern, the second one which I talked about, कि क्या questions आ रहे हैं, सब कुछ that has changed, but there's still a logical reasoning वाला line which is still intact, which is still the same. In English logical, there are still those passage questions which require a certain way of answering, which is intact. So definitely doing PYPs helps in that sense. And once you're done with PYP, so essentially CLAT like underlying reasoning is the same. Like questions का type change, genre of passage changes, but that one underlying reasoning is the same in my opinion. So if you're good with that, that way you will clear up. जैसे कहने को तो CLAT and ELIT के patterns are very different, right? But there's a friend of mine, Guru, who got a rank of 17 or 18, All India rank 17. And he had never given an elite mock in his life. He gave 300, 400 CLAT mocks, but never elite. क्योंकि उसके mind में कोई था ही नहीं LU Delhi. Now patterns are so different. But still he did really well in that paper because the underlying reason, that skill which is needed is then changes. So you know, one perspective which I had on this is, or अगर what they did was one passage, 5 questions English, okay, 5 questions logical. Okay. So it became like a very big shocker to a lot of people.
Now, I had also given that paper at my coaching, and I was getting marks equivalent to All India rank 14 in A-Late or something. Um, so, like, how I was able to handle the shock, obviously, I was not in the same position कि paper उस दिन देना अलग होता है, coaching में देना when you know कि stakes are not that high, so it's chill. But still, what like the way I trained my mind was, and something that you should also do, is just once you see that the pattern has changed, just repeat to yourself firstly that I'm very well prepared for anything because that underlying skill is intact and I'm very good at that. Secondly, just tell ki if I stay calm, then cut off already नीचे जा रही है. I am already doing well just by staying calm. So by staying calm, I'm winning like 50-60% of the fight already. Then and there. So essentially, a good student should feel very happy once the pattern changes because they know that they'll keep themselves calm and like cut off in general come hi jayega. So that is something that should make you happy. So the way to look at a pattern change is something like that. So and yeah, one more thing about pattern change, they are giving diverse sets of questions. Analytical was something which people missed for CLAT. Now they gave pura logical from analytical. So what we understand from this is do not miss out on anything. You should cover everything and anything which is possible. And once you have covered everything and anything is possible, your basic skill is intact. In that case, you genuinely do not have to get scared of pattern change. It's completely fine. I myself made that mistake in CLAT, pattern change, but yeah, my fear was कि pattern change to an easier side. Ki within the passages there are answers. So, but maybe I should have like that is one major thing which me and Mudit bhaiya pointed out later on A-Lit से पहले कि like issues in my mindset. Number one was कि मैं डरा क्यों. मेरे को तो ऐसा होना चाहिए था कि मतलब जब मैं देखा कि easy आया पेपर तो I was like shit अब everyone will get good scores and I'll like जो मेरी एज थी वो चली गई. ये सब I was thinking कि जी के मेरी एज थी now GK is not being tested ऐसा कुछ. But rather, my mind should have thought कि oh crazy easy paper मतलब I too will kill it कि now I should get 120 on 120. That should have been my uh, like mindset. And if I had thought about this and honestly ना छोटी छोटी चीजें मैटर करती है. अगर उससे मेरा mindset instead of being oh मेरी एज चली गई would have been okay करना 120 लेके आने इसमें क्योंकि अब पेपर बहुत easy and let's be the first person to actually get a full score in CLAT. Then that would have shifted my mindset, like my approach to a different way पूरा. When the paper मतलब मेरा ऐसा नेगेटिव आउटलुक था कि अरे पेपर इतना इजी आ गया अब हर कोई करेक्ट कर लेगा अब कुछ भी गलत नहीं कर सकते तो आई जस्ट बिकेम वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एंड वेस्टेड टाइम. एक क्वेश्चन जब मेरे को दिख गया आंसर बी है बट मैं दो बार और रीड कर रहा हूँ कि यार हो ही नहीं सकता इतना सिंपल हो कुछ और ट्रैप होगा. फिर भी ऑप्शन बी मार्क कर दिया जस्ट द करेक्ट आंसर बट स्टिल आई हैड गिल्ट कि नहीं कुछ तो होगा इसमें. तो मतलब ओवर एनालाइज करने लग गया. यहीं अगर मेरा माइंड सेट होता होता कि 120 लेके आने हैं तो मेरे को अभी भी होता है कि अर्जेंसी है अच्छे से पेपर करना है ओके तो सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. सो इसलिए it matters what you think in paper and if there's a pattern change what you should ideally think is कि अच्छे से सॉल्व करना है और लाइक अगर इजी भी हो जाता है तो जस्ट बी लाइक ओके देन आई नीड टू गेट अ फुल स्कोर इफ इट्स वेरी इजी एंड इफ इट्स टू अ डिफिकल्ट right, then be very, very happy कि cutoff is going low because of the fact that has changed. And secondly, pattern has changed to a difficult side, then like cutoff will go even lower. So it's even easier now. And I'm like good at all the skills which are needed. I've already practiced maths, I've already practiced analytical, everything which is there in the paper. Then I should not be scared of the paper. I will ace it. Now it's like my paper. So essentially, जो भी paper I have such a positive outlook and attitude that day that it is my paper. So yes, that is there. Make sense? Um, Yes, thank you. Perfect. Maybe to the next slide. Yeah, stop comparing your mock scores. So as I said, in like 6 months, when 6 months were left, उससे पहले my preparation was very cozy and like very sheltered. कि अपनी कोचिंग में ही चल रहा है and अपनी कोचिंग में at least I knew कि no one is cheating, right? So it was chill. But then when 6 months were left, I felt like कि okay अब तो things are different. कि अब तो competition से भी अब मेरे को I need to know who's my competition and all that. So I went on to all these Telegram groups, became a part of them where people essentially just share their mock scores. And what I thought was कि मेरे को तो ऐसे motivation मिलेगा कि okay, people are doing well, so I should also start putting in more effort. Rather, I got demotivated because people were doing ridiculously well, like crazy good they were doing. So I could not understand कि यार इतना अच्छा score कैसे आ सकता है. मतलब मैं एक
सेटिस्फैक्शन के साथ मॉक खत्म करता था कि ठीक है मॉक अच्छा गया, आई एम हैप्पी। फिर आई वुड सी मतलब मॉक स्कोर्स एट माई कोचिंग जहाँ बिना चीटिंग करे लोग दे रहे थे पेपर, आई वुड बी इवन हैप्पियर कि हाँ आई डिड वेल। बट देन व्हेन आई वुड गो टू टेलीग्राम आई सी कि ओ पीपल वर गेटिंग लाइक आई एम हैप्पी एट 80, here people are crying at 100, then I would think कि okay मतलब people are there who have gotten 111, and मुझे पहले लगता था कि सब सच्ची तो बोलते हैं, मतलब चीटिंग कौन करता है। तो देन इट हिट मी कि ये तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। देन आई वुड एनालाइज माय मॉक एंड आई बी लाइक यार अगर मेरा बहुत अच्छा पेपर चल जाता मैं इससे ज्यादा तो नहीं लेके आता था, मतलब 100 ले आता चलो बहुत ही अगर बढ़िया चल जाता, 110 कैसे लेके आता, मतलब मेरे को खुद समझ में नहीं आता अब बहुत बार। So I then realized कि these people were cheating. And this realization became sure after the result because those people who were getting like 110, every mock, they got a rank in 10,000s and 11,000s. So that is like obviously just shows कि a lot of people cheat. So essentially do not compare your mock scores and get very ऐसे down. बट यस दैट डज नॉट मीन कि तुम अपने शेल्टर्ड वे में रहोगे, ठीक है 40 मार्क आ रहे तो बढ़िया है 40 मार्क आ रहे हैं, जिसके ऊपर भी आ रहे हो लाइक चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा भी एटीट्यूड नहीं करना। कंपेयर योर स्कोर्स विद पीपल हु यू नो आर जेन्युइनली गिविंग द पेपर। So yes, that is one thing which I'll suggest. Compare, but keep it like take it in a good light only. There's like a friend of mine. He's currently in National University Jodhpur, and he had started off at like a very low score, 20, 30, 20 marks, 30 marks. I was scoring around hundreds, but he always compared his score to mine, but never took it in a negative stride. He was always ki, okay, there are 70 marks which I could have gained more, and like if he can do well, I can also do well, and that is exactly what pushed him to work so hard, and he did like amazingly well in CLAT. So yes, that is one thing. Comparison has to be in a positive sense, but if you believe ki like comparing with someone you are having negative feelings, you are getting bogged down, then it's better not to. So yeah, that is that. Um, so yes, now essentially I guess very important part, key stay anchored. This essentially means that um, I'll tell you what had happened with me. So I had cleared Super 30 type exams of like a coaching. They had offered me being a part of the Super 30 thing, and I did join that, and like it became I got no value out of it. I just joined the Telegram group just where people were comparing their scores and everything. And I started feeling FOMO कि लोग तो और क्या क्या I started feeling bad कि मेरे स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, ये सब नहीं आ रहे. But then my mentor Mudit bhi helped me out through that phase, just keeping me anchored to the basic things which are there, which is basically कि mocks अपने solve करो, बट ठीक है दूसरों से कंपेयर करो, बट दूसरों के कंपैरिजन से ऐसे बॉक डाउन मत हो जाओ, पॉजिटिवली ही लेना है। और ठीक है अगर कुछ लोग के कुछ क्रेज स्कोर आ रहे हैं कुछ मॉक्स में, डज नॉट मीन कि उस दिन रेप्लिकेट हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो लोग काम नहीं रहेंगे, तो फोकस ऑन बीइंग काम, फोकस ऑन डूइंग ऑल दैट। तो डेफिनेटली दिस वन ऑन वन mentorship on a like daily weekly basis helped me a lot. So it's very important in these next 6 months to stick to the basics. Even if you're scoring very high, do not um, like become very high headed. If even if you're scoring very low, do not get very bogged down. You have to maintain a consistent or a constant level of satisfaction and happiness, so that you're able to do the paper well. And also one thing which I've noticed is if in the beginning of the paper you're happy, then the paper essentially goes better. But if you are sad in the beginning of the paper itself, then it does not go that well. So yeah, that is that. Anyone has any questions at this point in time? Anyone? Uh, Bhaiya, I have a little something. yeah. So, I've been giving some mocks and मैंने बात notice की है कि coaching में my mocks have a certain range कि Hmm. from mid to late 60s they go to 70s and एक बार hundreds में आ रखे हैं and Hmm. no matter what I do मैं जितने attempts कर लूँ मैं जितनी accuracy fluctuate हो जाए मेरा score उसी range में रहता है. It does not go up, it does not go down. So what do I do about it कि वो थोड़ा positively grow करे, मतलब मेरा change हो. Um, that is a good question, and that is what we call a plateau.
कि स्कोर एज Okay. प्लाटू, कि ऊपर नहीं बढ़ रहा नीचे नहीं हो रहा, ये सब कुछ. Hmm. My NLU Jodhpur friend had a plateau of at like 60-70 marks, and that was for an year. Like वो उतने ही Okay. लेके आता था. बट उसके लिए क्रेजी चीज ये हुई कि 150 का पेपर होता था 60 लेके आता था, फिर 120 का पेपर हो तब भी 60 लेके आ रहा था. तो Hmm. उसके मतलब, and that's true, that happened. But the way to break out of plateau is you have to like understand कि कहीं ना कहीं you are messing up, कि there's some Yeah. pattern to you not scoring higher. Do you do maths right now? Do you like, what's the score in maths usually? मैथ्स का आई थिंक इट काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन द मॉक. जिस दिन थोड़ा इजी मॉक आता है उस दिन आई कैन स्कोर 9 समथिंग. थोड़ा मुश्किल मॉक आता है 5-6. Um, so yes, maths is something जो चाहे जैसा पेपर आए, it is something where you can definitely score a 12 on हम्म. 12. So that is one way to break the plateau. 6 marks get added there. Second major reason why people plateau is because उनका English logical legal comes at a perfect level, जहाँ पे उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है usually, क्योंकि कभी English मुश्किल होगा तो ठीक है, हम्म. उसमें कम आगे लॉजिकल इजी होगा तो उसमें तो मतलब एक ब्रॉडर इन तीन सेक्शन में सेम से मार्क्स आने लग जाते हैं. आइडली अगर वो पीक हो रहा है, कि एक जनरली स्टेज होता है जब वो पीक करता है कि इसके ऊपर मार्क्स लाने इज नॉट नीडेड और नॉट पॉसिबल एज सच, then it's fine. But if your score is plateauing in these three, then maybe there's like, then you have to go through a granularity and look at each and every section. कि logical में जैसे हम्म. I'm not clear with um, like certain concept, that's why I'm not able to do those questions or getting those right wrong, and that is why my score is looking such illogical. Yeah. So then you start working on those things that you identified. But one major reason why I've seen people and plateau is current affairs. So they don't start current affairs up until at least 6 months, and that's why this current का score is low, and then they're like, oh मेरा score plateau हो गया. That is majorly because तुम्हारा English logical legal already अच्छा है, तुम हम्म. already उसमें अच्छा कर रहे हो. मैथ्स में भी ठीक ठाक, मतलब मैथ्स में डेफिनेटली बढ़ा सकते हो, बट 5-6 मार्क का फर्क आएगा उसमें. पर करंट अफेयर्स में तुम 28 में से you're getting like a score of 5, 6, 7. हम्म. That is where you will see like a good improvement in these 6 months, because now you start doing current affairs. Now के current affairs matters over पिछले Yeah, टाइम yeah, के yeah. current affairs. So वो plateau बहुत बार तो current affairs पढ़ने से ही खत्म हो जाता है. Okay. So that is there, but do not be complacent. You have to be sure कि in those reading sections um, it is happening क्योंकि like हाँ, reading sections में when like you should be sorted कि हाँ ये you're perfect and हम्म. like you're getting good marks because you've peaked. You should be at that comfort level. So Okay. yes, do not be complacent. But majorly I believe current affairs जब शुरू करोगे अच्छे से तो ये sort हो जाता है खुद ही. And like one more thing, I've noticed Hmm. that some of my logical majorly, I tend to go towards the wrong answer, and that answer does not have a pattern. It is very passage specific. कि it is not a pattern, बस मेरे को passage में वो समझ में नहीं आया या I misunderstood it. मैंने कोई word नहीं पढ़ा, जैसे not नहीं पढ़ा. So how do I go Hmm. about those कि मैं उन्हें कैसे हटाऊं? So this is classic fatigue plus fatigue हो गया. बिकॉज इन स्कूल यू नेवर हैड टू गिव सच पेपर जहाँ पे 2 घंटा बैठ के बस रीडिंग करनी है. हमारे जो पेपर होते थे 3-3 घंटे के, उसमें खुद भी लिखना है सब कुछ. सो जब ऐसे पेपर आए तो दैट्स व्हाई न्यू एक्सपीरियंस, and you just get fatigued because your reading speed might not be so much something during the paper. So all these things happen. So that is why you miss on the not नहीं पढ़ा, like silly mistakes there. मैंने which I did was the हिंदू का जो साइड वाला टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में जो भी एडिटोरियल वाला जो पेज होता है उसके साइड में जो छोटे छोटे वो बॉक्सेस होते हैं जिसमें कुछ एडिटोरियल टाइप्स होता है, उसको आई वुड रीड एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद लाइक 3 minutes एंड आई वुड टाइम माई सेल्फ एवरी डे बिकॉज वो रफली सेम लेंथ का होता है. तो आई वुड टाइम माई सेल्फ कि मेरे को एक पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है. आई स्टार्टेड ऑफ विद 3, at the end I have like 1 minute something, 1.5 minutes something like that.
So yes, that is one way to check your reading speed. And yes, this means कि तुम्हारा उसका comprehension should be like good. ऐसा नहीं कि comprehension खराब कर ले उस चक्कर में. So that is there. उसके अलावा just give more mocks. उससे fatigue खुद ही हट जाता है. जो one mock a Okay, day which yeah. I did, उसके बाद definitely 2 घंटे की concentrate करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. और the third thing which you can do is अपने study sessions को 2 घंटे या फिर 2 घंटे से ज्यादा कर रखो एटलीस्ट. एक घंटे के study sessions बंद. Okay. उससे थोड़ा setting की आदत बनती है. So these Okay. things are what you can do. Okay. So Thank yeah, you. no worries. Yeah, any other wait, discipline कैसे maintain करूँ week में ये 2 दिन कुछ distraction हो ही जाते हैं. Discipline कैसे maintain करा जाए? Um, that is a question, everyone. But maybe knowing your why is what helps you out. CLAT में it almost just becomes a routine. So discipline should not be out of motivation कि आज motivated हो, आज कोई fun सा गाना सुना या फिर कोई अच्छी रील देखी तो फिर आज motivated रहे, बढ़िया दिन गया. It should be rather based on routine कि रोज ये करना ही है बस आके like रोज you're doing that. So yeah, discipline routine, discipline is not motivation. But yes, everyone has their own way. But I to get rid of for DIM during preparation and filtration paths कनक थोड़ा ये आपकी सब साइड कुछ से कर वो सकता है. इंटरनेट लैग कर रहा So है मेरे हिसाब yes, से, between 70 है ना including GK. गाइस? That हाँ कनक थोड़ा सा ना, हाँ लास्ट का जो I'll लास्ट का change my लाइक internet. आई थिंक 10-15 सेकेंड जो बोला वो कुछ सुना ही नहीं दिया ठीक से. Okay. I was talking about discipline, I guess. Am I audible now? Yeah. So discipline in general is just saying ki learn like if you are getting distracted because of certain things, then just note them down and get rid of them. Distractions like Instagram, then just delete it. So phone games or anything, delete them. So yeah, maybe just make it a bit difficult to access those things, and yeah, that's how you become a bit more disciplined. But yes, there's one question which everyone struggles with, and there are like personalized answers to it. But yes, one question is attempts are stuck between 60 to 70, excluding GK. That's classic not having utna reading speed. Only way to improve it is practice. Practice, just make reading a habit. So न्यूज़पेपर को जब पढ़ रहे हो तो उसे टाइम करो अपने आप को. ज़्यादा मॉक्स तो धीरे धीरे खुद ही रीडिंग स्पीड बढ़ेगी. So that is how you work on that. I hope that answers. So yes, any other questions which are there? So, Yeah. so what would you suggest somebody who is from a PCM background and who really struggles with economy के passages? Even in GK, whenever RBI का something comes, so I get really confused and I feel like नहीं ये नहीं करना है. And to work on that, I tried Hindu ka the economy ka section, but that feels a little easier as compared to the economy passages that come in my mocks. So, what would you suggest on that? Okay, so firstly, I also do not have this inertia. The fact that you're not from a humanities background, you cannot have good economics पे a hold. Because मेरे को तो honestly 11th 12th की economics में ऐसा कुछ ज़्यादा crazy नहीं पढ़ाया कि जो CLAT मिल पाया हो इतना. Rather CLAT preparation helped in eco का school preparation. So, but yes, there are certain basic things which you should know. I knew them before coming into 11th and 12th because I had done so many, like so much newspaper reading कि अब जैसे repo rate. If you do not know what is repo rate, then essentially you do not like you cannot make sense out of certain economics passages. If you do not know that what is a bond, government bond, and how yields affect borrowing. So these are certain थोड़ा technical चीजें. So the way I just went about it was one thing which worked in my favor was I was very interested in all this from very beginning. So mainly say watching certain YouTube videos of those nature, reading certain articles of that nature was very normal. So that is why I had an idea about all this. अब जैसे um, anyone? तो वो No कनक one थोड़ा follows the channel.
थोड़ा सा दोबारा कुछ, लैग हुआ. हाँ दोबारा लैग हुआ. I was just asking that who follows Think School. There's like a YouTube channel called Think School. Okay, Anushka. So इनके लिए थोड़ा सा ऐसे था चैनल्स फर्जी फॉलो करना. फॉलो करना. बट ये सब जैसे कल उसकी वीडियो, जिस कल एक वीडियो केम एंड दैट्स टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स यील्ड ये सब कुछ ऑन यूके, कि यूके एक लूप में फंस चुका है, तो उसमें वो एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे से. सो हैविंग दैट इंटरेस्ट एंड वाचिंग सच वीडियोस हेल्प्स. ए बी आई वुड सजेस्ट, लाइक अब 6 months का टाइम है, तो बेस्ट फेस जस्ट गो ऑन लाइव मिंट, read certain 3-4 editorials of economics from live mint on a daily basis, and anything new that you come across with, any new word that you come across with, any new concept that you come across with, go to AI, ask it to explain it to you in a very simple manner. So use ChatGPT, Gemini, whatever. But yes, so that is how you essentially become more like normal with eco passages. That's just practice and knowing the terms, and all of this can go hand in hand if you just do editorials on a daily basis and then research about them thoda. So yeah, that is my way of going about them. So what was the YouTube channel that you just mentioned? Could you please repeat? Yeah, Think school. think school. Yeah, Sorry? think Think school. school. Okay, thank you so much. No worries. Think school will talk about multiple different things. Also, it's not just about economics. आप कोई भी genre के passages पढ़ने जाओगे, problem आती है when we don't know the basic terms in that particular field. जैसे economics में जैसे Kanav talked about, so they will talk about multiple different things. ऐसे ही आप, if you just read about finance and you watch a few videos on finance, you'll be able to find so many terms जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स का कोई भी पैसेज आएगा वो पढ़ना इजी हो जाएगा आपके लिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, आप बेसिक इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा वंस इन अ व्हाइल यू कैन जस्ट वॉच यूट्यूब वीडियोस ऑन यूट्यूब, एंड उसके साथ साथ जो करण ने बोला रीड करने का लाइव मिंट. अगर कोई लाइव मिंट से ऊपर लेवल पे जाना चाहता है, सो देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. दैट इज समथिंग जो लॉ स्कूल में हमें सजेस्ट किया गया था, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीड दैट. अभी से बता रहा हूँ, इट्स नॉट समथिंग कि आप लोग को अभी समझ में आने, अगर समझ में आने लग जाए तो दैट इज ग्रेट, बट वो थोड़ा हाई लेवल की इंग्लिश है, तो आई थिंक उसका एक्सेस मिलना इज ऑल्सो लिटिल डिफिकल्ट. सिमिलरली आई वुड से आपको डिफरेंट जॉनर ऑफ पैसेजेस वैसे भी पढ़ने चाहिए. यू शुड रीड आर्टिकल्स, यू शुड रीड आर्टिकल्स ऑन साइकोलॉजी, यू शुड रीड आर्टिकल्स ऑन इकोनॉमिक्स, यू शुड रीड आर्टिकल्स ऑन एंथ्रोपोलॉजी, एनी रैंडम स्टफ यू कैन रीड अबाउट, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्लैट के एग्जाम में व्हाट टाइप ऑफ पैसेजेस यू माइट एनकाउंटर. 2-3 years back they were still giving really difficult passages to read. अभी थोड़ा सा I think the passages का level is not so difficult. So इस case में we don't really say कि go crazy about reading a new genre of passage every day, but yes, reading, having a different uh, exposure to different types of articles and passages definitely helps a lot. चलो guys, अगला question बताओ. If anyone has any other question, कुछ भी है, whatever they want to ask. हाँ, किसी ने भी चलो चैट में ही लिख रखा है कि if I'm doing bad in a certain section, what should I possibly do to get out of this phase? One trick that really helped for a student was, अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है मॉक का वो खराब हो रहा है, just take out a day or two, don't do any other thing, and just analyze and study every mock that you've given और उसका वो पर्टिकुलर सेक्शन. जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मेरा क्वांटिटेटिव में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इफ यू गिवन 10, 15, 20 मॉक्स, तो आप एटलीस्ट लास्ट 10 सारे मॉक्स को उठाओ एंड जितने पास से पेपर्स हैं उनको उठा सकते हो, एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व देम एंड अंडरस्टैंड देम. कई बार क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये लास्ट वाले मॉक में ये वाला जो क्वांटिटेटिव का सेक्शन था ये अनरीजनेबली डिफिकल्ट था, या ये सेक्शन जनरली डिफिकल्ट था, या इस सेक्शन में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लेंथी थी, एंड दिस इज समथिंग दैट नोबडी कैन डू. जैसे कनम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया यहाँ पे कि व्हेन ही सॉ हिज स्कोर्स इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स, इसको लगा कि अच्छा इसका स्कोर इज कम, एंड उसमें ही जस्ट थॉट लॉजिकली इसमें कितना बेटर मैं कर सकता हूँ. तो यस, यू कांट डू बहुत ज्यादा कुछ बेटर इन दैट.
Similarly, when we used to have these conversations, I told Kanav, कि you can't, like nobody can teach you a lot of other like different things जिससे आप क्लैट में कुछ exceptionally score कर सकते हो. You just need to ensure that throughout the year your confidence stays at a certain level, and you just keep talking to people जो आपको सही positive vibes दें, सही positive guidance दें. if somebody tells you यार आपका तो mock score 100 से कम नहीं आना चाहिए, आपका तो mock score इतने से कम नहीं आना चाहिए, आपको जीके के अंदर you need to do 50 topics a month, तो वो it will take me 5 minutes to basically rule that argument out कि कैसे that argument is flawed. कि 50 टॉपिक्स अगर आप हर मंथ के जीके के कर रहे हो, दैट डज नॉट मेक सेंस. देयर आर यूट्यूब वीडियोस every day talking about newspaper analysis. There are YouTube videos talking about पूरे पूरे मतलब 50-60 टॉपिक्स ऑफ जीके. पेपर में एंड में 6 टॉपिक्स आने हैं जीके के. इफ वी लुक एट लास्ट ईयर का पेपर, वो जो 6 टॉपिक आए थे जीके के, 6 या 7 जो भी आए थे, दे वर वेरी रीजनेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इफ वी लुक एट 2025 का पेपर, 50% ऑफ द जीके वाज फ्रॉम समथिंग जो पैसेज में दे रखा था एंड फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. 2024 का पेपर था जो कनव ने दिया था, जिसकी वजह से कनव गॉट रियली फ्लस्टर्ड ड्यूरिंग द पेपर. मेजोरिटी जीके पैसेजेस में से आंसर कर सकते थे. तो 10-10 घंटे जीके पढ़ने का सेंस नहीं बनाता अगर आपके बाकी सारे सेक्शंस वीक हैं. सो प्रिपरेशन शुड बी रीजनेबल. यस यू शुड, जैसे कनव ने बोला कि आफ्टर पॉइंट ही डिड नॉट हैव अ लॉट टू स्टडी, तो वो मॉक्स दे रहा था. उसका मतलब ये नहीं था ही वुड गो अराउंड एंड आस्किंग पीपल एंड टॉकिंग टू पीपल, अच्छा मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरा ये लेवल है. अपना लेवल चेक करो, बट आस्किंग समबडी जिसके जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो कि हाँ ये लेवल मेरा ठीक है, एंड वो पर्सन भी बोले कि हाँ इतना ही करने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी का कोई भी डाउट है? वी हैव 7 to 8 minutes. Yeah, even उसके if बाद after there's one vocab question as well. हाँ, Even after learning all vocab of Norman Louis, I will encounter. Okay. So yes, vocabulary के लिए Norman Louis is like a starting point, it's not the end point. And vocabulary किसी की भी perfect नहीं होती, I guess, except शायद जरूर. But इसलिए just whenever you come across new words, write them down in a diary. I had diaries and now at the end it was 3 diaries which I had कि उसमें नए नए वर्ड्स लिखे हुए थे. तो दैट इज द वे आई वेंट अबाउट इट. बट ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट से वर्ड का मतलब जानना इज अ स्किल विच यू शुड लर्न. तो कॉन्टेक्स्ट से कैसे होगा उसके लिए वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. जब मॉक में है तो ध्यान से उन क्वेश्चन को देखो, आसपास के वर्ड्स पढ़ो, जो ऑप्शन गिवन है कि इसका ये मतलब है उसको एक बार डाल के देखो कि अगर ये मतलब होगा तो विल द सेंटेंस मेक सेंस और नॉट, ये सब कुछ. So that is there, and apart from the newspaper reading, you will definitely come across new words every day. In fact, the Hindus now started that they write one word every day, which is new. And like now, even now when I read the newspaper, very frequently it happens that the word that is their word of the day, I have never heard of it as well. So yes, that is certain way by which you can keep increasing your vocab. एक और टिप मैं दे देता हूँ वोकैबुलरी की. वैसे तो लाइक आई वाज सजेस्टेड बाय समबडी आई रियली लुक अप टू. उन्होंने बोला था कि रीडिंग आपकी वोकैबुलरी अपने आप कवर कर देती है. इफ यू रीड अ लॉट देन यू विल obviously encounter so many vocabulary words that are going to be used on a normal basis. But if somebody wants to check their vocabulary का level, there is this word list called GRE word list. आप उसमें से चेक कर लो कितने वर्ड्स आपको आते हैं, एंड उसके हिसाब से मतलब देखते रहो कि अच्छा देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको 50-60% ऑफ दोज वर्ड्स आते होंगे. नॉर्मली इट इज सेड कि इसके बाहर के वर्ड्स नॉर्मली यूज नहीं होते एंट्रेंस एग्जाम्स में, एंड इट्स अ वेरी रिलायबल एंड अ गुड सोर्स टू जस्ट मेजर योर लेवल इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी. सो इट्स कॉल्ड जीआरई वर्ड लिस्ट. जीआरई की एग्जाम होता है, ये उसी एग्जाम की बात कर रहे हैं किसी और की, बट यस ये वर्ड लिस्ट इज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट. ठीक है, जीआरई वर्ड लिस्ट. आई थिंक अयाना ने अपना हाथ रेज किया था. अयाना, गो हेड. I have a question, थोड़ा basic है. It's more like कि if a mock is moderate to tough, so should I focus more on accuracy or attempts? Because my focus actually inclines towards accuracy during that time. मैं फिर attempts इतने नहीं, I don't prefer taking risk during those papers. Even if I'm getting confused between two options, I would rather play safe because I feel that already it's a paper which is moderate to tough. So why should I take risk?
Although मैं भी थोड़ा सा when such a situation was there in front of me, I used to take like I also used to take a थोड़ा सा easier approach या फिर थोड़ा सा safe approach. But कनव भैया का I know कि ये थोड़ा सा रिस्की गेम खेलते थे, इनके लिए वो अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते थे। एंड जैसा कि उस दिन उदय भैया ने भी बताया था क्लास में कि आप जब तक थोड़ा सा रिस्क नहीं लोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो अयाना, द सेफ रूल इज आप ऑब्वियसली ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू गेट टू द राइट आंसर, बट एक टाइम लिमिट के साथ कि यस आई स्पेंड 1.5 minutes। उसके बाद अगर सही आंसर आता है ठीक है, नहीं आता तो आई जस्ट लीव इट। बिकॉज माई टारगेट इज कि जो वर्बल सेक्शंस होते हैं आई थिंक दैट आई शुड अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम, बट सो दैट्स माई टारगेट। बट इन मॉडरेट टू टफ पेपर्स आई यूजुअली लाइक अगर नहीं होता सो देन आई मूव हाँ ऑन। हाँ हाँ। बट ये डिसाइड करना कि वेदर द पेपर इज मॉडरेट और टफ, वो पूरी तरह तो हम पेपर के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। बस यस इट डज गिव अस अ गुड आइडिया। बट ठीक है, बट आप यही ट्राई करो कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अगर नहीं हो रहा तो जस्ट लीव इट। पर कनव भैया यूज टू टेक दैट रिस्क फैक्टर थोड़ा सा, जो मेरे को याद है, कनव एंड प्रणव ये लोग थोड़ा सा रिस्क उठा लेते थे। Plus, I had one more thumb rule. If I'm able to eliminate two options, definitely going for it. No questions asked. 50% probability in general is very nice. And if in general the paper is going very well, 3 पे भी I would take. मतलब अगर एक भी eliminate नहीं कर पा एक ही eliminate कर पा रहा हूँ तब भी I'll take a risk. तो yeah, and मैंने क्लैट में भी रीडिंग पूरा अटेम्प्ट करा था, मतलब जो छोटा था थोड़ा अपना उस वजह से छोटा था, but एलिट में I did not leave a single question. So yes, and अब जैसे पेपर आ रहे हैं, leaving a question could be like very risky and very costly. तो हाँ. हाँ, अनुष्का गो हेड। अनुष्का हैज अ डाउट। Hi, sir. Actually, more than a doubt, I just want some advice. I was hoping to ask you at the end because it's regarding my scores and stuff. I can ask you now, I have no issue. But या you गो हेड। can wait at the end, I'm fine with that. अच्छा, कोई इन जनरल डाउट है तो आप वो बता दो। लाइक कोई प्रिपरेशन स्पेसिफिक डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है गाइज, एनीवन एल्स? किसी और का कोई भी डाउट है? किसी का तो नहीं है? चलो, एक आई थिंक क्वेश्चन आया है चैट में। यार, मॉक आप फिनिश नहीं कर पा रहे, उसका तो सिंपल सा तरीका यही है कि यू ऑब्वियसली नीड टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर रीडिंग स्किल्स। दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है उसका सॉल्यूशन, वो बारी बारी प्रैक्टिस कर करके ही आएगा। इफ एनीबडी हु स्टार्ट्स रीडिंग, लाइक नो मैटर एट व्हाट एज, ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ की जो फर्स्ट एवर नॉवल पढ़ते हो उसको पढ़ने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है फॉर मोस्ट पीपल। बट धीरे 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 यू डोंट टेक दैट मच टाइम। आपको कोई भी रैंडम नॉवल पढ़ने के लिए यू वोंट टेक मोर देन अ डे और टू आफ्टर सर्टेन पॉइंट। तो इसीलिए अगर कोई मॉक देना स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में यू विल फील टायर्ड, यू वोंट फील गुड while giving the mock. धीरे धीरे you will get into a habit where you will finish it off before time. So Supriya, that's the common thing. वो practice कर करके आएगा, there's no shortcut to it. ये कनव ने actually he gave in total like more than 250 mocks in his CLAT preparation. तो उसके बाद एक level आ जाता है। And he gave like for 3 months he gave a mock every day. So that's a very different level of preparation. I know somebody जो दिन के 2 मॉक भी देता है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो नहीं करना। डोंट थिंक ऑफ गिविंग 2 मॉक्स पर डे। ठीक है, चलो guys, anything else? LSAT papers are good for practicing RC, yes, they definitely are. But ये इंश्योर करना कि you don't base your whole preparation on LSAT papers, because I heard somebody ask this question कि considering CLAT paper pattern might change this year, can we base our whole preparation on NSAT and NLAT? That is the only thing you should be careful of. बाकी LSAT papers are decent, like genuinely decent papers for RC practice. Hmm. चलो ठीक है, एनीबडी एल्स? कोई और डाउट नहीं है तो चलो लेट्स एंड द सेशन। किसी को अगर कोई स्पेसिफिक डाउट पूछना है, यू कैन स्टे बैक, लाइक पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन डाउट पूछना है तो यू कैन स्टे बैक।
रेस्ट ऑफ यू गाइस कैन लीव। आई थिंक इशिता का एक डाउट था। इशिता आपने हाथ रेस किया था ना शायद? सर हाँ प्लीज गो अहेड। सर मेरा ये डाउट था कि सर हम मॉक को एनालाइज कैसे करें सही से। मतलब मैं कैसे करती हूँ एनालाइज मॉक को, कि जब मैं मॉक देती हूँ, मॉक देने के बाद मैं वो चेक करती हूँ कि किस सेक्शन में किस में ज्यादा नंबर कटे हैं मेरे, और किस में मतलब और कम हो गए नंबर किस सेक्शन में। उसके बाद जो सेक्शन में ज्यादा कटे हैं उसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर भी उस सेक्शन में नंबर नहीं बढ़ते, तो कैसे करना चाहिए? इशिता, व्हेन वी टॉक अबाउट कि किसी क्वेश्चन किसी सेक्शन में नंबर मार्क्स कटे हैं, किसी सेक्शन में वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट अ डिसेंट नंबर, फर्स्टली आप ये देखो कि वो मिस्टेक क्यों हुई है। हर बार मिस्टेक विल नॉट बी कंसेप्चुअल, मतलब वो कंसेप्ट्स के बेसिस पे मिस्टेक नहीं होती। अ लॉट ऑफ टाइम मिस्टेक हैपेंस बिकॉज ऑफ अ सिली मिस्टेक। अ लॉट ऑफ टाइम्स मिस्टेक हैपेंस बिकॉज यू अटेम्प्टेड द पेपर इन द रॉन्ग पैटर्न। सो अगर आपने इमेजिन कोई डिफिकल्ट सेक्शन उठा लिया है पहले स्टार्टिंग में पेपर का, जो उस पेपर का डिफिकल्ट सेक्शन है, एंड देन यू एनालाइज दैट पेपर कि अच्छा ठीक है मैंने इसको उठाया था और इसमें मेरे मार्क्स नहीं आए, तो वो एक टोटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो जाता है। समटाइम्स स्टार्टिंग विद एन इजी सेक्शन एंड देन गोइंग टू अ डिफिकल्ट सेक्शन, वो डिफिकल्ट सेक्शन का अगर स्कोर 15 आना होता वैसे नॉर्मली, वो उसका स्कोर 25 भी आ सकता है। लाइक जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो जब भी यू फाइंड ट्राई टू फाइंड मिस्टेक्स कि मेरे इस सेक्शन में मार्क्स कटे हैं एंड आई एम नॉट बीन एबल टू स्कोर अ डिसेंट स्कोर इन दिस सेक्शन, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मिस्टेक क्यों हुई है, एंड वो मिस्टेक के तीन चार अलग रीजन होंगे, एंड उसको उस हिसाब से टारगेट करो। कि अगर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था तो यस कीप दैट इन माइंड कि हर बार मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है। अगर कंसेप्चुअल कोई मिस्टेक था तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करो। इफ यू वर ओके सर। टायर्ड, कई बार ये भी होता है कि हम ठीक से सो के नहीं आए होते घर से, हमारा ब्रेन उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए, या फिर वी आर अ लिटिल स्कैर्ड ड्यूरिंग द पेपर, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है कि लास्ट टाइम मेरे मॉक में आई स्कोर्ड 60 मार्क्स, तो इस बार मेरे को 70 तो लाने ही लाने हैं। कई बार हम वो अनरीजनेबल हम्म। एक्सपेक्टेशन भी डाल देते हैं अपने ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देती है। तो ऑलवेज कीप दीज 5, एंड मैंने ये बता भी रखा है कि मॉक्स एनालाइज करने के लिए देर आर लाइक 5-6 डिफरेंट थिंग्स। आप उसको करना स्टार्ट करो एंड उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, इससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है क्या करना है, गेट अ हैंग ऑफ इट। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, तो आई एम एंडिंग द लाइव स्ट्रीम, एंड इसके बाद किसी का कोई पर्टिकुलर डाउट होगा आप लोग